सो थैंक अब यू। ट्रेनिंग कैसे चलता है, लाइक हाउ डू यू ट्रेन योर स्टूडेंट्स, क्या उनका डाइट पैटर्न होता है, हाउ डू यू अप्रोच, क्योंकि हर स्टूडेंट की नीड्स अलग हैं, सो डू यू डू दैट? Again, I want to address this. Thank you so much for asking this question. What is happening is there are many spaces. So calisthenics has to be done in open air, ideally. यस। बहुत बड़े होते हैं in terms of any calisthenics park. What happens is there's a group of 20-25 people doing the same set of exercise. एक routine बनता है और सब लोग एक साथ कर रहे हैं. But what people don't understand is और वो सर्विस थोड़ा चीप मिलता है आपको बिकॉज देयर आर सो मेनी ग्रुप, इट्स अ गेम ऑफ वॉल्यूम. तो सबका शेयर, यू नो हाउ द मैथ वर्क्स राइट. पैसा कम हो जाता है उसमें ग्रुप ग्रुप क्लास. सो एक group पे किसी का नी खराब है, किसी का लोअर बैक खराब है, और सब लोग एक ही साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑन द सेम थिंग. साइड में मोटिवेशन है, अंडरस्टैंड, साइड में देख के यू आर पुशिंग योरसेल्फ, बट यू आर नॉट. ट्रेनिंग हैज टू बी पर्सनलाइज. सबका यस। अलग. मेरा बॉडी अलग है आपसे, तो आपको जहां पहुंचना है उसका जर्नी भी अलग होगा, उसका ट्रेनिंग भी. एंड इट हैज टू बी सिस्टमैटिक राइट. तो दिस लीड्स टू इंजरी. तो व्हाट माय पर्सपेक्टिव वाज कि हाँ, हमेशा से कि जो इंसान जैसा है, आई विल चार्ज अ लिटिल प्रीमियम बिकॉज आई एम, मेरा सर्विस है वैसा. बट आई वांट टू पर्सनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ द मेंबर्स दैट आर गेटिंग ऑन बोर्ड विथ मी. सो एट आर जिम व्हाट हैपेंस इज सबसे पहले तो फिटनेस असेसमेंट होता है जहाँ पे यू अंडरस्टैंड कैलिस्थेनिक्स बिकॉज इट्स वेरी न्यू. तो कैसे ट्रेनिंग होने वाली है, स्ट्रक्चर क्या है, हम कैसे ट्रेन करें, ये सारी चीजें बताते हैं. देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पहुंचना है. तो हमारे बैच में इट्स नॉट अ वॉल्यूम गेम. हम लोग पैसा ज्यादा चार्ज करते हैं, बट वी हैव ओनली 5 पीपल इन आवर बैच एंड वी आर 3 कोचेस ऑन द फ्लोर. तो हर एक कोच को पता है कि इसको क्या जरूरत, आपकी बॉडी को क्या जरूरत है, एंड वी ट्रेन यू पर्सनलाइज. सो फॉर एग्जांपल इफ यू कम टू मी एंड से पुल अप मेरा ड्रीम है, मेरे को पुल अप अचीव करना है, तो आई विल नॉट डू पुल पुश कोर लेग्स फॉर यू. I'll give you 3 days a week of guidance with pull on all the 3 days, Monday, Wednesday, Friday. तो आप जो जो चीज आप ग्रुप ट्रेनिंग में 7 महीने में करने वाले थे, मैं आपको 2 महीने में करके दूंगा बिकॉज यू हैव गिवन मी दैट गोल राइट. तो पर्सनलाइज ट्रेनिंग से इतना फर्क पड़ता है. तो वाओ। वी आर गोल बेस्ड एंड वी आर जिम इज ऑल अबाउट पर्सनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, लवली फिटनेस एक्सपीरियंस. यू शुड कम हियर. awesome, I am planning to really. तो अगर हमारा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हर एक का डिफरेंट होता है, तो सेम गोज फॉर डाइट एज वेल, कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। Diet is more about, see, your body is being fueled by your food, right? Yes. So आप जो खाना खाते हो that converts into energy, then you can do daily activities. When you start training things like calisthenics, your body is under a lot of external load. Normal एक तो mental pressure होता ही है, but body पे physically load भी बहुत है. Hmm. Get that protein requirement, आपको वो सब करने का जरूरत है. So I am someone who never recommends supplements because the reason being, supplement again is one chemical. It's made of, it's protein, right? We are understanding कि किसी ने प्योर प्रोटीन बना दिया, उसमें एडल्ट्रेशन नहीं, जो क्वाइट कम लोग करते हैं, बट स्टिल वी आर टेकिंग द बेस्ट केस सिनेरियो कि प्योर प्रोटीन है आपके बॉडी में, एडल्ट्रेटेड प्रोटीन नहीं जा रहा. बट अगेन, मेरा बॉडी इज वर्किंग इन वन में. माय हार्मोन्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स. एवरीबॉडीज हार्मोन्स आर डिफरेंट, बट द केमिकल दैट वी आर पुटिंग इन अ बॉडी इज सेम. जो डब्बा बनता है, तो वो मेरे बॉडी के अंदर कैसे रिएक्ट करेगा अपने को पता नहीं. काफी एथलीट्स है जिनको पिंपल्स दिखेंगे फेस पे, बॉडी अच्छा बन जाता है, ऑब्वियसली यू आर गिविंग प्रोटीन, साइंस दैट दैट दैट्स इट्स जॉब. बट अंदर के हार्मोन्स में क्या चेंज हो रहा है अपने को पता नहीं. देयर आर मेनी एथलीट्स हु आर टेकिंग 1 स्कूप प्रोटीन पर डे, 2 स्कूप्स ऑफ प्रोटीन पर डे. तो नॉर्मल खाने में प्रोटीन जा रहा है, आप एक्सटर्नली प्रोटीन डाल रहे हो, बट बॉडी कैन प्रोसेस ओनली 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट. तो का जो एक्सेस प्रोटीन है वो यूरिन से बाहर निकलता है, बट द किडनीज आर गेटिंग लोडेड एक्स्ट्रा प्रोटीन की वजह से. सो 30-35 तक आप यंग हो, बॉडी में काफी एनर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 35 के बाद जो इफेक्ट्स है इन सब चीजों के, दैट इज गोइंग टू रियली वर्सन योर हेल्थ. विच इज वाई हमारे जिम में मैं खुद कभी प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं खाता हूँ. एंड आई नेवर रिकमेंड टू द क्लाइंट्स. वो लोग पूछते हैं कि जल्दी करना है तो क्या करना है, मैंने बोला अच्छा खाना खाओ, थोड़ा और मेहनत करो, 2 घंटा वर्कआउट करो, प्रोटीन खाने का जरूरत नहीं. एंड डाइट में इफ यू आर आस्किंग, तो इट्स मोर अबाउट होम फूड. माई बिलीफ सिस्टम इज, आई माइट बी रॉन्ग ऑन दिस वन, बट ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मेरे घर का जो खाना है वो मेरे बॉडी के लिए है. मैं अगर 20 साल बड़ा हुआ मेरे घर का खाना खा के, तो नो मैटर हाउ हेल्थी फूड यू मेक, तुम्हारे घर का खाना मेरे बॉडी के लिए बाहर का ही. मसाले अलग है, ऑयल अलग है, वो सब.
तो जो प्रोसेस मैं अगर आज से रोज आपके घर का भी खाना खाता हूँ तो मेरे बॉडी को टाइम जाएगा उसको अडेप्ट करने में। एंड व्हेन वी आर हैविंग आउटसाइड जंक फूड, अपना बॉडी एक तरीके से बड़ा हुआ और फिर अचानक से 20-22 साल पे अपन ने जंक फूड खाना चालू किया, तो वो जो गड़बड़ हो रही है दैट इज रियली अफेक्टिंग आवर हेल्थ इन टर्म्स ऑफ This is a हेल्थ। problem. हाँ, सो दैट्स व्हाई घर का खाना इज प्रिफर्ड। और फिर साथ में जो रॉ फूड्स है जो नेचुरल, जैसे एग्स इज अ नेचुरल फॉर्म, कहीं भी खाओ एग एग होता है, राइट? फ्रूट्स Hmm. फ्रूट्स होते हैं। तो वो सब चीजें अगर चेंज करते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। Okay. Then again, vegetarian or non-vegetarian, does that make a difference? कि किसी की एनर्जी ज्यादा होगी या something like that? तो our body doesn't really understand veg food, non-veg food. It is chemicals, right? Hmm. So I जो चिकन है और whatever the non-veg food is, उनके it's also a body, right? तो उनको प्रोटीन बॉडी को चाहिए, अपने बॉडी को चाहिए, वो उनमें होते ऑलरेडी अच्छे essential amino acids. Hmm. So the protein that you're eating is better in terms of non-veg because Hmm. उसमें, but then if you want to use whey or if you want to use vegetarian food also, you can do, ऐसा कोई, it is up to your preference. मतलब काफी ऐसे लोग हैं जो दवाई की तरह नॉनवेज को खाते कि भाई मेरे बॉडी को जरूरत है इसके लिए मैं खा रहा हूँ। Hmm. मॉरल ग्राउंड्स आल्सो कम इन कि भाई किसी को मार के अपना पेट भरना अच्छा नहीं। सो इट इज, I don't want to debate on that. It's completely up to people's preference. But I Choice. suppose ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay. Awesome. So now you're a manager of calisthenics space at Goregaon Sports Club, which हम्म। sounds very fancy and I have no idea what that means. So what are your responsibilities, your initiatives? How does it work? इसका थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं मैं क्या हुआ था। बिल्कुल। There was this I was working at a calisthenics space outside, जब तक मेरा जिम नहीं बना था मैं बाहर काम कर रहा था। वहां पे there was this student and he was very enthusiastic about calisthenics. तो गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत पुश मिलता है, हर एक स्पोर्ट को सपोर्ट बहुत है वहां पे। तो दिस गाय थॉट अबाउट एंड ही इज, जो मेरा स्टूडेंट था, he was a member of GSC. This guy thought of building a calisthenics because he could see the effects on his body and his family. He wanted to build a calisthenics space for this club. So he was well connected to me and he started conversing with me कि ऐसा करना है, प्लान है, क्या कर सकते। तो उन्होंने पूरा जिम बना दिया and then I was approached to manage that space कि भाई अब obviously the chairman person wouldn't know about calisthenics, किसी को पता नहीं है, you need someone who knows the field to create routines, to create a structure. तो मेरे को पहले सिर्फ हेल्प के लिए बुलाया कि तभी मेरा जिम भी बन रहा था। तो बिकॉज ही न्यू मी और मेरा जिम बन रहा था, ही वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कौन से बार कहाँ लगाए तो बेटर है, क्या कर सकते वो बात। सो आई वेंट देयर एज अ हेल्पिंग हैंड टू द पर्सन कि भाई ये सब करो एंड दैट टर्न्ड इनटू अ आइडिया कि भाई व्हाई डोंट यू मैनेज दिस स्पेस। दैट्स व्हेन जीएससी फिर चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई, प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई, कन्वर्सेशन हुआ, दे लाइक मी, आई लाइक देयर अप्रोच, माइंडसेट्स मैच हुए, तो दैट्स व्हेन आई टुक अप द जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। So, 1 साल होने आया गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को एंड द लर्निंग एक्सपीरियंस इज अमेजिंग बिकॉज ऑल माई लाइफ आई बीन ट्रेनिंग पीपल, लाइक पर्सनली वन ऑन वन लेना, स्टूडेंट्स को करना, मैनेजमेंट रोल कभी किया नहीं था मैंने। सो दिस वाज अ वेरी न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। तुम्हारी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी है लाइक वन डॉट इज कनेक्टिंग टू द अदर one thing happened then this thing happened so it's a lot of destiny in play is what I am feeling. So do you believe in that and what's your concept of spirituality? अगेन आई एम लविंग दीज कॉन्वर्सेशंस बिकॉज जो भी चीजें मैं, मेरे को ना कोई दोस्त नहीं मिलता है इन टर्म्स ऑफ ये डीप बातें करने के लिए, समथिंग टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड स्टफ। तो व्हेन यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस आई एम रियली लविंग इट। That's why we are accountability partners. या तो व्हाट आई बिलीव इज कि नियत साफ होना चाहिए और आपको आपका गोल पता होना चाहिए, आपको कहाँ पहुंचना है। अगर नियत साफ है तो चीजें फॉल इनटू प्लेस। I remember 2017 में when I started calisthenics and I was into competitive sport, मैंने पेज पे लिखा था I want to own a gym and maybe I तभी मैं मुझे ऐसा लगा था कि जब 35 का हो जाऊंगा, लाइफ में बहुत मेहनत कर लूंगा, तब जिम खोल दूंगा। सो 2 साल में वो चीज होनी, इट्स कम्प्लीटली मैजिकल फॉर मी। कैसे होती है मुझे नहीं पता। व्हाट आई डू इज आई राइट माई गोल्स एंड मेरे को मालूम है कि मैं जो भी काम करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ। मतलब नहीं तो मैं ना बोल दूंगा कि ये काम मेरे से नहीं होगा, बट अगर मैं कर रहा हूँ तो पूरा एफर्ट लगा के कर रहा हूँ। कोई क्लाइंट को सिखा रहा हूँ तो बेस्ट चीज, मेरे पास जितना भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसके लिए जो अच्छा है वो सब
मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ. आई गो बियॉन्ड माई वे बिकॉज दिस इज माई पैशन. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोचेस का अप्रोच रहता है कि 7 to 8 का क्लास है तो 8 बजे मैं चली जाऊंगा, राइट. मेरा ऐसा अप्रोच नहीं होता है. मतलब जब तक मेरा काम फिनिश नहीं हुआ एज अ कोच ऑफ दैट वर्कआउट सेशन, मैं वो काम छोड़ता नहीं. तो बड़े 8:30 बजे या 9 बजे, आई 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 डोंट रियली केयर अबाउट दैट. तो आई थिंक वो लोगों का गुडविल, एंड आई थिंक ह्यूमंस आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वाइब. जो हम वाइब्स बोलते हैं ना, वो Yes. ऑनेस्टी है, एक पैशन है, वो दिख जाते हैं. तो कहीं ना कहीं मेरे पास पैसा नहीं है आज के डेट में, लेकिन लोगों का प्यार बहुत है. अगर मैं मेरे स्टूडेंट्स को देखूंगा, तो अगर आई आई हैव टू से टुडे कि आज मेरे को प्रॉब्लम है, तो आई हैव 20, 50, 100 पीपल हु विल स्टैंड फॉर मी टुडे. उतना रिलेशनशिप है मेरा. सो आई थिंक दैट जो दुआएं मिलती है वो हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ. स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैं तो यही समझता कि जो भी करो दिल से करो, बाकी सब हो जाएगा. हूं. और गोल चार्ट बना के रखो कि कहाँ पहुंचना है, वो पता हो यूनिवर्स को, टू हेल्प यू आउट. आई एम अ वेरी डीप फॉलोअर ऑफ संदीप महेश्वरी. तो उसके उन्होंने एक बात बोली थी कि भगवान को फिट बॉडीज नहीं मिलती है काम करने के लिए. द यूनिवर्स वांट्स टू वर्क थ्रू यू, बट उनको वो माइंडसेट नहीं मिलता है या वो प्योरिटी नहीं मिलती है लोगों के थ्रू काम करने की. यू बिकम दैट प्योर इंस्ट्रूमेंट एंड द यूनिवर्स विल वर्क थ्रू यू. वो बात मेरे को हमेशा हिट करती है. एंड आई थिंक आई वांट टू बी अ गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर द यूनिवर्स टू डू गुड थिंग्स. Whoa, that was deep. You are basically living your dream life. या यू कैन से दैट, बट अभी दैट्स द ह्यूमन ट्रैप. नो, एक ड्रीम Hmm. अचीव हुआ तो 10 और खड़े हो जाते. अभी कोई Okay. और कर रहा. Okay. Now I'm gonna throw a googly at you. या Ready? या Are you single? आई वाज व्हाट द. This is for the ladies out there who are stalking you on Instagram. आई I got आई you, bro. You've got a wing woman here. People crave for this. I'll take this opportunity for sure. I am saying, but I need someone who is inclined to spirituality and who has a vision of doing something in their life. मतलब कुछ ना कुछ का काम कर रहे हो ना, कोई पर्पस को अचीव कर रहे हो, तो वी कैन टॉक अबाउट थिंग्स. नहीं तो मतलब बाकी चीजें नहीं हो पाएगी मेरे Ladies, take notes. से. But what I wanted to ask is, ki, what is your idea of a an ideal relationship basically? Like, क्या उसका base होता है and what can be a deal breaker? कि अगर ये है, it can't work out for me. रेड फ्लैग, are you asking me about red Yeah, flags? basically red flags. Yeah. Okay. आई थिंक अनडिरेक्टेड लाइफ इज अ रेड फ्लैग फॉर मी. मतलब बॉडी मिली है, मिला है, इंटेलेक्चुअल मिला है, तो उसको यूज करके भाई एटलीस्ट एक पर्पस की तरफ, क्लैरिटी नहीं भी हो लेकिन यू शुड बी स्ट्राइविंग टुवर्ड्स दैट Yes. अंडरस्टैंडिंग ऑफ. वो आई थिंक दैट्स अ नो नेगोशिएबल फॉर मी. अनदर थिंग इज आई डोंट लाइक ड्रामा. मतलब जो अगर चीज पसंद नहीं है तो बोल दो मुंह पे. मतलब बात कम्युनिकेशन होना चाहिए, इज व्हाट आई एम Double ट्राइंग टू. standards नहीं चाहिए. हाँ, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, बट होता है ना कि मन में कुछ और है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे. तो आई थिंक उतना Hmm. कॉन्फिडेंट, अगर रिलेशनशिप एज अ पार्टनर आप बात कर रहे हो, तो ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन तो उतना तो आई कैन एक्सपेक्ट. Yes, true. वो दो नो नेगोशिएबल है, बाकी तो इंसान पे डिपेंड करता है. Okay. So now for the people that who have already been impressed with you, let's show them another thing that you recently started. So you have also participated in a public speaking reality show lately. डन दैट, वी बोथ आर. You're welcome. Yeah, I will take the credit for it, या honestly, because या I knew that you would make it, but you were not taking it. And you did the same thing in the previous season. So how was the experience? अगेन आई वाज अ वेरी शाय किड इन माय स्कूल. तो मतलब पब्लिक स्पीकिंग अगर मुझे पीपीटी देना है क्लास में, तो आई वाज मतलब आई यूज्ड टू शिवर. पसीना आता था मेरे को एंड आई यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट. तो पब्लिक स्पीकिंग का फियर तो था ही. देन दिस सुपर स्पीकर का कोई एड आया था, सीजन 2 का. मैंने उसमें रजिस्टर किया, बट कभी करेज हुआ नहीं कि भाई चलो करेंगे पार्टिसिपेट. द होल सीजन आई वेंट विदाउट पोस्टिंग एनी सिंगल वीडियो. पार्टिसिपेशन का रजिस्टर फॉर्म मैंने भर दिया. देन यू माय अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रियली हेल्प मी कि भाई नहीं तू कर ले, कोशिश तो कर, कोशिश तो कर. तो राउंड 3 में भी, और यू वर गोइंग टू पार्टिसिपेट. Yeah. पार्टिसिपेट किया, पहला वीडियो डाला, सिलेक्ट हुआ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, कैमरा कॉन्शियस था. तो एवरी वीडियो आई वाज मेकिंग, आई वाज गेटिंग अ लिटिल मोर कंफर्टेबल विद द कैमरा. तो वो ग्रोथ जर्नी देखा, एंड दैट इज अ लवली लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज public speaking is something which
आई नेवर थॉट आई कुड गेट ओवर. मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये चीज मेरे लिए है ही नहीं. शायद हमें लगता है ना कि मैं सब कुछ कर लूंगा लेकिन ये चीज मेरे लिए नहीं. इस पे फोर्स मत करो. Mental break. ऐसे लगता था कि वो चीज है मेरे लिए. बट देन दिस सुपर स्पीकर एक्सपीरियंस, आई थिंक लगभग 6 से 7 वीडियोस अब तक शूट कर लिए. तो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन माई बिजनेस. बिकॉज आज तक मैंने कभी इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग किया नहीं, कभी चेहरा दिखाया नहीं, कभी एजुकेशन दिया नहीं. Mm. तो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, आप इंस्टाग्राम पे भी रील्स बना रहे Yes. हो, वैल्यू एडिशन कंटेंट टू पीपल. So it's a lovely growth journey, and I strive for growth. I'm living for growth in my life. The thing I want to address here is the mental block that you had with public speaking, because I can recognize it. I have done that for the students in my community कि मुझे पता है कि it's just a matter of practice कि अगर एक बार आप घुस गए, आपने फेस कर लिया कैमरा को, you'll obviously get better. But the way you turned out, I was like, he's a born public speaker. Literally, that was shocking for me as well when I saw your like latest videos of Instagram as well. I'm like, this is next level. I knew you would make it, and right now we are in top 500 and still striving to get better. But मुझे पता था you will get there. But the way your videos turned out, that was beyond my expectation too. So I want to address that. Thank you so much. Okay, awesome. So up for the people who are like wanting to start being a coach like you, right? Joe, who are all in, they either have the base or they are willing to do the hard work to get there where you are right now. Because obviously you are an inspiration to a lot of people now. So how can they approach it and how can they start this journey? So again, Pure Calisthenics is purely based on passion to help people. मतलब हम लोग जब we are when I say we are a personal training gym, the coach really matters a lot. The kind of self image he has or the kind of attitude he has towards his work really matters. So I want to take this moment. अगर आपको genuinely लोगों को help करना है या you want to become a coach, you want to understand वो अंदर से जो deep desire है, तो you can definitely connect with me. I have some ways to help you out, either by online अगर आप कोई और state में हो, or at the GSC management जहाँ पे I can give you opportunity as a coach, or you want to do a training program जहाँ पे coaching का experience ही नहीं और आपको समझना है, तो I can take you in as an intern at my space as well. Because see, for me also, I cannot. I have a very big mission when it comes to impacting lives. तो वो काम मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगा, right? I'll need a good team. So I am also in constant need of good people around me, someone who's passionate about fitness, who's want to. So अगर ऐसे कोई लोग हैं और वो सुन रहे हैं ये बात, तो आ जाओ भाई, कर लेंगे कुछ ना कुछ. Opportunities तो है मेरे पास. We can do something for you. And how बस can नियर we connect with you? Instagram है. We'll put a link. कोई email कर दो, Instagram कर दो. Yes. I feel is better because I also get to know कि भाई किस तरीके का language है, what is your thought process. Okay. Okay, Yeah. accountability partner. You're ready for this segment called Keep It Swift? I don't know about this, but yeah, I'm ready. Bring it on. Yes. Okay. So I'm going to be asking you like questions and you have to say the first thing that pops in your head. Like you have to be swift. You have to be fast. Okay. Okay. Ready? Yeah. Okay. So what is your proudest accomplishment? The gym. Okay. Last person you searched on Instagram. I think there's this influencer, JC, fitness Okay. influencer. What are your favorite exercises to do on a regular basis? I love pull-ups. I find it very hard. I I'm can do them not for. good Obviously, it'll take some practice, but at it. once you achieve it, see the results. It's magical. Pull-ups are magical. Yeah. Okay. You can list out other exercises too. I think dragon flags. I love working on my core. So dragon flag is a skill. It's an advanced skill, but Bruce Lee को आपने देखा होगा. So he goes in the straight line, right? Yeah. I love dragon flags. Whoa. Okay. First thing you do in the morning. Read my goal chart, like the goal that I've made for myself. Nice. High performance right there. Books you would suggest that people should read. Multiple. How to win friends and influence people. Hmm. In terms of fitness, I think strength conditioning hai. So if you want to understand how strength works, what I loved is Atomic Habits, Yes. uh, and Rajiv Talreja's. If you want to go into business, Rajiv Talreja's book Lead or Bleed, hands on.
lovely. Okay. And for nutrition or diet? So, The Great Indian Diet. The book's name is The Great Indian. वो Indian diet के ऊपर है, the benefits of it and why you should switch to Indian diet. So it's good But for the beginner. हाँ मतलब समझने के लिए if you want to do some self training तो The Great Indian Diet is amazing book. Okay. What is your biggest fear? My insecurities, I have a lot of them. Currently, my biggest fear is dancing on the floor. I look very stupid when I dance. Chalo. I take accountability for that. I'll change that. Please. Had you met yourself 5 years ago, what would you have said to him, to yourself? अच्छा जा रहा है चलते रहे सही जा रहा है Your biggest failure and what did you learn from it? JC management. So what was happening was I was running my own gym और JC भी था साथ में. तो यहाँ पे I didn't have any trainer. I was personally training my clients. और वहाँ पे 4 coaches लगा दिए, imagining कि they magically know what to do and how to train people and तो उनको कोई guidance मिला नहीं because I was occupied. जो obviously fitness का training peak is around 7 to 10 in the morning. So I was occupied पूरा floor वो लोग कुछ भी कर रहे थे. Like they didn't have proper guidance, proper management issues I had. But still, I'm really grateful कि वो opportunity अभी भी मेरे पास है. There were other people who pitched for that position, but I think बीच में मैं जा रहा था and I could take that again. I'm saying pure intention, passion लोगों को दिखता है शायद कि ये इंसान से गलती हुई है, but वो genuine है. तो वो उस basis पे एक और opportunity मिला. I will see. Okay. So you've already answered this, but still, pull-ups or push-ups? Pull-ups anytime. Introvert or extrovert? I am an introvert. I want to be an extrovert now. You're on the way. Cats or dogs? Dogs anytime. Cats are very selfish. I hate cats. I don't like cats. They're Dude, very you're gonna get lashed at for this. Night owl or an early bird? I think I'm an early bird. मैं सुबह उठ के काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ. I need to learn that. 3 habits that changed your life. Learning first of all. मैं सीखता हूँ. Reading and public. It has given me a different confidence. मतलब कुछ भी कर सकता हूँ मैं दुनिया में. Who's your spirit animal? Monkey. I'm a calisthenics guy. Obviously monkey. Nice. So movies or series that you really liked and why? I don't watch series. I think those are productivity wasters. तो movies में I think भाग मिल्खा भाग अभी दिमाग में आ रहा है. MS धोनी दिमाग में आ रहा है. Pursuit of Happiness दिमाग में आ रहा है. I watch basically life changing movies. वो सब ज्यादा देखता हूँ मैं and I like like या तो मेरा extreme case चलता है या तो बहुत inspiring movies या तो एकदम घटिया something like बोल धमाल Cringe. तेरा Comedy. कॉम हाँ. 3 personalities that you really feel impacted from. My mentors basically Sandeep Maheshwari and my father Kamlesh Shah. Wow, that's beautiful. Your favorite action hero? Akshay Kumar. Hands down. Okay. Your top 3 destinations you would like to visit or you have already visited but really like. National or international? I'm not someone who's a travel person. I think I can say what I like. मतलब वो places दिमाग में नहीं है कि मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है. I've Europe, I've seen Paris, I've seen US, but what happens is with me, मेरे को जगह याद नहीं रहती. मतलब लोग ट्रैवल करते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड लोग ट्रैवल क्यों करते हैं. लाइक वो करके होता क्या है. बिकॉज लोग तो सेम ही है ना यार. बिल्डिंग्स ही तो है और क्या है. आईफिल So टावर what's इज. your idea of travel then? आप क्या देखने जाते हो in other countries or places? आई ट्रैवल टू टेक माई पीस टाइम. मतलब काम से दूर, स्ट्रेस से दूर. नॉर्मल मैं इफ आई एम ट्रैवलिंग आई एम नॉट यूजिंग माई फोन. वो सब बंद करके जाता हूँ. कोई मेरे को कनेक्ट नहीं कर सकता है उस टाइम पे. तो Awesome. मतलब टाइम पे जाता हूँ मैं. आई डोंट ट्रैवल फॉर सीइंग प्लेसेस और हैविंग एक्सपीरियंस. आई वांट टू डू बंजी जंपिंग दो. स्काई डाइविंग करना है, बंजी जंपिंग करना है, ये Dude, सब. I was about to ask that. Like, what is your go-to adventurous sport? आई थिंक आई एम मेड फॉर एडवेंचर्स. कुछ भी अगर नया दिखा दो तो मैं करना पसंद करूंगा उसको. What all things you have done? नॉट मच. I've done I think not much यार. आई हैवंट बीन. काम पे ही फोकस था अभी 6-7 साल सिर्फ काम किया. अब धीरे धीरे आ रहा था. अब करूंगा मैं चीज. बट आई हैव डन रैपलिंग. अरे डूड हाउ कैन आई मिस दिस.
चारधाम गए थे हम लोग, चारधाम राइट. Yeah. 40 feet से I've dived into Ganga River, chilled Ganga River, and I don't even know swimming until now. Are you तो crazy? रिवर राफ्टिंग होता है, ठीक है, रिवर राफ्टिंग होता है, एंड वहां Yeah. पे ये क्लिफ है, आपको जंप करना है तो कर सकते हैं. आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट ऑफ द बोट. यार मेरे को करना है भाई, मेरे को स्विमिंग नहीं आता है. चलेगा, बोलते लाइफ जैकेट पहनो, चले जाओ, कुछ नहीं होएगा. हम लोग सब लाइन लगा रहे थे, देयर वाज अ लाइन. मेरा चांस आया, बंदा 1 2 3 बोल रहा है, 1 पे जंप सीधा. Oh my God. I can never do that. Ah. Literally, I went deep. I went deep and I was not coming up. The jacket was not helping me come up. मतलब मेरे को ऐसा लगा तभी, because सर it was 40. It takes time to build the buoyancy. Got panicked. I was like कर तो लिया, अभी क्या करूँगा. फिर ऊपर आया, फिर they took me again. That was a lovely experience. You undermine yourself like I do. We need to stop doing that. Okay. Best compliment you have ever received. आप मेरे को पहले मिले in terms of fitness. मतलब यार क्या, तू 3 4 साल पहले मिला होता तो साला बॉडी अलग रहता, ऐसा लोग बोलते. Yeah, I agree. Yeah. So, your favorite body part and one quality that you really like about yourself. I think my purity and my learning, because I feel मैं किसी का कुछ बुरा नहीं करता. So that I love about myself. And what was another question? In physical appearance, what's the body part that you like the most in your body? My face, my Oh, abs, my abs. I don't know. that's the answer people are looking for. Okay. So, if a book was written on your life, what would you name it? What would I name it? The guy tried. The guy died trying. Whoa, that's a good one. Your podcast that you listen to and you would recommend to other people. Raj Shamani for business. Figuring out. Yeah. Convo with Ayush for. Fizz bomb. Yes. This is what we are looking for. Subscribe. Rajiv Talreja. So I don't follow podcasts. I follow people. So People. जो चाहते हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ, वैसा है. तो आई फॉलो राजीव तलरेजा. आई फॉलो बिजनेस बेसिक. आई फॉलो फिलहाल उतने ही ध्यान में आ रहे. जेसी. जेसी इज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, फिटर का फाउंडर है. Yes, yes. He's insane. उसको फॉलो करता हूँ. कुणाल, सीईओ ऑफ क्रेड. आई फॉलो कुणाल. 3 इनफ है ना अभी, और कितने चाहिए. Awesome, awesome. Now prioritize health, relationships, career, money, spirituality. 1, 2, 3, 4, 5. हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर. Career, money, spirituality. आई थिंक health should come first, spirituality second, relationships third, career fourth. ये अगर सब चीजें ठीक हो जाएगी तो पैसा बनेगा, जितना बनेगा. Awesome. Wow, dude, this was one of the most fun Keep It Swift I've had till now. Great. Congratulations. Yeah, it was amazing. Like I said, this is gonna be raw. So I can see that rawness here. सही. Okay, अब एक मेरा खुद का question that you do so many things in a day, in a week, in a month. How do you keep yourself motivated, focused, and productive? What I feel is, मैं जिस पोटेंशियल पे काम कर सकता हूँ वो पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है. बट द ग्रोथ जर्नी टेल्स मी डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज आई एम ग्रोइंग एवरी डे. सो हमेशा आपको ऐसे ही लगने वाला है कि मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ. सो व्हाट आई हैव लर्नड इज एक्सेप्टिंग योर बैड फ्लॉज एज वेल. मतलब अगर मैं खुद को ऐसा बोलूंगा कि मूवी क्या देख रहा है, काम कर ले, इतना कुछ काम पड़ा है, तो आई हैव स्टार्टेड टू एक्सेप्ट माय दोस थिंग्स नाउ. सो आई डोंट थिंक प्रोडक्टिविटी 24 घंटे कोई कर सकता है. आई हैव ट्राइड डूइंग दैट. आई हैव ब्लेम्ड माई सेल्फ. आई हैव गॉन इनटू अ फेज वेयर आई वाज हेटिंग माई सेल्फ बिकॉज ऑफ दैट, कि आई एम नॉट बीइंग एबल टू स्टे प्रोडक्टिव और स्टे मोटिवेटेड. सो आई थिंक find your center,
कि आपको जेन्युइनली क्या करना है। वो मिलने के बाद थोड़ा थोड़ा काम उस पर करते रहो और फ्रेंड से मिलो, मूवीज देखो। लाइफ इज मेंट टू बी फन यार, मतलब खाली काम काम प्रोडक्टिव थोड़ी करना है, इट हैज टू बी फन। Awesome. And how are you so focused? I have not seen many people as focused as आई एम नॉट, ऐसा लगता है कि मैं फोकस्ड हूँ, you. हाँ, बट करेंटली आई फील आई एम फ्यूल्ड बाय माय सेंस टू ग्रो। मतलब मेरे अंदर जो सीखने का इच्छा है ना, वो मेरे को फ्यूल करता है। तो आई थिंक उसकी वजह से शायद मैं ऐसा दिख रहा हूँ कि मैं फोकस्ड हूँ, बट बहुत सी चीजें हैं जो मुझे करनी है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा न्यूट्रिशन का कोर्स है जो 6 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ। आई वॉन्ट टू गेट दैट लर्निंग, मेरे को सीखना है ह्यूमन बॉडी के बारे में और डीप जाना है, न्यूट्रिशन के बारे में, तो कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आई एम ऑक्यूपाइड इन अदर थिंग्स। you're ऑल्सो आई फील, inspiring. मतलब जिम में कुछ हो गया तो जिम पे ध्यान दे दिया, जीएससी में कुछ हो गया तो वहां ध्यान दे दिया, फैमिली में कुछ हो गया तो फैमिली पे ध्यान दे दिया। तो आई थिंक बैलेंस क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है टाइम का, और ग्रोथ तो होना ही है। ठीक। Perfect. So you prioritize, you act, and you are driven. That's your secret. ड्रिवन फॉर श्योर, मतलब वेरी ड्रिवन। सुबह उठ के दिमाग में रहते हैं कि आज आज क्या सीखना है, आज क्या करना है। Okay. One key learning from your life. अगर एक ऐसी चीज, सपोज यू वांट टू टेल योर फ्यूचर किड्स कि ये बेटा ये याद रखना, तो वो क्या होगा? लर्निंग से बड़ा कुछ है नहीं इस दुनिया में, बिकॉज आपको ऐसा लगता हो कि मैं ये फील्ड का मास्टर हूँ, मुझे ये आता है, बट यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, राइट? अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ गया कि जो चीज एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी दुनिया में, बट आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे हो। तो आई थिंक वर्ल्ड इज फिल्ड विथ लॉट ऑफ अमेजिंग पीपल, लॉट ऑफ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। एंड अगर इफ आई हैव टू टेल माई किड, तो कभी भी तेरे को कुछ नहीं आता है, सीखते रहे। बिल्कुल कुछ नहीं आता। कोई भी फील्ड में तू मास्टर है, कितना भी बड़ा हो जाए, तेरे को कुछ नहीं आता है, सीखते रहे सीखते रहे सीखते Awesome. Lastly, your one message to the youth of India. रहे। दिल दिल से बता दो, एकदम दिल से। बिल्कुल बिल्कुल. The पैसे के पीछे, tagline is what's in your heart. You have to speak your heart out. केपेबिलिटी पे ध्यान दो, हेल्थ पे फोकस करो। हेल्थ नहीं रहेगा तो कितना भी पैसे कमा लो, 35 के बाद लोग मेरे पास आते हैं। कितना पैसा है, मैं किस सेक्टर में काम करता हूँ मेरे को मालूम है, किन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, किनको ट्रेन कर रहा हूँ। उन्होंने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया ऑलरेडी, जो अपन आज सोच रहे हैं। और उनके पास बॉडी का सपोर्ट नहीं है, तो दे आर वेरी वेरी ट्रबल्ड, बहुत परेशान है वो। बॉडी को ठीक रखो। माँ बाप से बढ़कर कुछ है नहीं। माँ बाप को कितना भी कुछ भी हो, यू टेक दैट स्टेप टू कम्युनिकेट विद देम। वो प्रॉब्लम सॉल्व करो आपके तरफ से। आपके अंदर माँ बाप के लिए कुछ गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक हैव फन इन योर लाइफ यार, जियो। और क्या, जो जो करना है वो करो। यू मेक मिस्टेक्स, लर्न। Wow, acceptance. Dude, you really have inspired me today. And I already knew you. This was amazing. थैंक यू, My, आई लव। I loved it. Thank you for being genuine. Thank you for keeping it raw. And thank you for being yourself. You are amazing, literally. Straight from बस the heart. वही वही करना है लाइफ में, और क्या करना है। यू हैव टू बी यू। Thank you. Thank you, accountability partner. मजे आ गए. जेन्युइनली बता रहा हूँ आयुषी, इतना आई आई मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे कोई दोस्त मेरे को समझते नहीं है इतना डीपर लेवल पे। सो आई थिंक कम्युनिकेटिंग विथ यू इज ऑलवेज अमेजिंग, बिकॉज वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अराउंड 2 to 3 months आई थिंक। तो हमेशा जब मैं तेरे से बात करता हूँ ऐसा लगता है कि यार कोई समझने वाला है, मतलब जो भी डीप चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ कोई सुनने के लिए है। दैट इज अपार्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, बट ऑन द पॉडकास्ट आई थिंक सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन रीच योर काइंड ऑफ पीपल। आई थिंक सबका एक टाइप होता है। एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे एटलीस्ट 2 से 3 लोग भी मैसेज करेंगे ना कि आई आई कैन अंडरस्टैंड वेयर यूर कमिंग फ्रॉम, और आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो भी 2 से 3 लोग ने भी बोल दिया, तो आई थिंक ये कन्वर्सेशन मेरे लिए, ये जो टाइम अपन ने दिया वो सक्सेसफुल हो गया। मेरे लिए it's already successful. I've had another deep convo that I'm always looking for to see into people's minds that yes, like what is their story? How do they become who they are today? And you are inspirational, dude. I'm glad to be an accountability partner, a friend, and future student of you. So much.
lot of things from you. Thank you so much. Likewise, likewise. Thank you so much for this amazing convo. Yes. Fist bump. See you soon. See Thank you you for soon. this amazing, amazing podcast episode. Thank you. आई होप कि इस एपिसोड से आपको कैलिस्थेनिक्स के बारे में और फिटनेस के बारे में बहुत सी नई जानकारी मिली होगी जो शायद इसके पहले आपको ना पता हो. So if you found this useful and valuable, please drop comments and subscribe to the channel, and do not forget to check out Pure Calisthenics if you are ever at Mumbai. And especially the residents of Mumbai have the chance to learn from Punit himself, and he has amazing space at Mumbai. So please go and check it out, and also check out his YouTube channel and Instagram profiles in the description. Do not forget to subscribe and drop down the comments of your key learnings, and share this with each and every person who is enthusiastic about fitness and calisthenics. I will see you in the next episode. Love, love. Adios.